Hello students, I am Sanskriti from EseUp and I will request you all to subscribe this channel to get more updates. Today we will start with topic respiration. We will now start with the respiration. So how the absorbed food is converted into energy. Okay. आज हम जानेंगे कि कैसे जो एब्जॉर्ब फूड होता है हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ था। हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़े थे कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो सिमुलेट हुआ था। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था और एसिमुलेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ था। तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में ही बात किए होंगे। सबसे पहले we all know that for all activity we need energy. So from where this energy comes from? And the energy comes from this energy comes from the food that we eat. Okay, हम लोग को सारे एक्टिविटीज के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, हमें सारे एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये सारा एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? This energy comes from the food that we eat. Okay, and we had read about the digestion process, absorption process, assimilation process in previous classes. Okay, so we had already studied about how food had been digested and absorbed. Now the question is, after assimilation, how we get the energy? Okay, how we get the energy after assimilated. So we had seen that assimilation had been completed in small intestine. Okay, so now the question is how we get that energy. This is what we are going to talk about, the energy in this topic. Okay, and this is the assimilated molecule holding the energy. Okay, right? So how this energy is released? Okay, so respiration. So what happens that energy is released by the oxidation of assimilated molecule. अब देखिए आप, absorption, यहाँ digestion हो गया था पहले ही, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इससे वाला पहले वाला प्रोसेस जो है हमारा वो डाइजेशन का था। ठीक है, डाइजेशन पहले ही हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब एसिमुलेशन। तो इस रेस्पिरेशन में होता क्या है एक्चुअली? जो एनर्जी रिलीज्ड है, ओके, जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन, वो कैसे होता है? ये जो एसिमुलेटेड मॉलिक्यूल है, ये एसिमुलेटेड जो मॉलिक्यूल है वो जो होल्ड किया हुआ है एनर्जी, इसी से एनर्जी रिलीज होता है। और वो होता कैसे है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसके बारे में थोड़ा और अभी समझते हैं क्या है रेस्पिरेशन। So for oxidation of this molecule we need oxygen. Okay, for oxidation what we need? We need oxygen, and we take it from the atmosphere. Okay, because we are well known the contribution of oxygen, nitrogen and carbon dioxide in the environment, and the oxygen contribute around 21% of it. So now how do organisms take this oxygen? Okay, so see, they obtain oxygen from external environment. This happens in all living organisms. Here we will talk about the process of whole respiration. Okay, तो हम लोग भी क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा। ओके, तो अब है क्या कि ये एसिमुलेटेड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो ही ये एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है,
So oxidation of assimilated molecule releases their simplest food particle, that is glucose, and that will give us energy. What happens? See, we would read first sentence. What is written? Respiration broadly means the exchange of gases. Yeah, it's mean exchange of gases. We take in O2 and we expire CO2. Okay. What is our second point? Animals and plants have different means of exchange of gases. ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों के पास डिफरेंट वे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. ठीक है. थर्ड पॉइंट, at a cellular level, respiration means the burning of food. I repeat, at a cellular level, respiration means the burning of food for generating the energy needed for the life processes. Okay. So, cellular respiration may take place in the presence or absence of oxygen. Okay. See what happened, that this is glucose. Oxidation of assimilated molecule releases their simplest food particle, glucose, which is glucose. Okay. This is glucose which we get from our food. Okay. In the presence of oxygen. What is the formula of glucose? C6H12O6. And this is oxygen. Okay. So what happened, that this is glucose and this is oxygen. Glucose we get from our digested food. And in the presence of oxygen, this oxidation of food, oxidation of glucose take place, in which we get energy. Okay, energy in the form of ATP, and that can be used for the cell activities. Example is muscle contraction. Okay, and here CO2, carbon dioxide is released in the environment, that we expire out. Okay, and this is the water, 6H2O. This is the water. So this carbon dioxide is released in the environment. Okay, and this energy is stored as ATP. And this is actually the released energy we were talking about, that can be used in various activities. So I think this is clear now. Okay. Now we come to our next point, that what is ATP now. Okay, what is ATP? We are seeing that energy is stored in the form of ATP. I had just said it. So what is ATP now? See, what is ATP? It stands for adenosine triphosphate. Okay. Now you must be wondering that what is ATP? See, the energy which is released must be stored now for providing us later when needed. Suppose a scenario. Okay. अब आप लोग देखिए ATP है क्या? ये एक करेंसी है ये, ठीक है, एनर्जी का करेंसी. So that we can store it. Okay. अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए. मान लीजिए कि आपको कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपने पापा, फादर से, मदर से मांगते हैं आप. ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने ऐसा डिसाइड किया कि वो आपको रोजाना ₹50 देंगे सिर्फ आपके एक्सपेंसेस के लिए. कभी आपको पेंसिल लाना है, कभी आपको बुक्स लाना है, कभी आपको कॉपी लाना है, तो आपको वो डेली ₹50 देंगे आपके एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है, अब आपको एक दिन बहुत जरूरत पड़ गई, आपको किसी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना था. ठीक है, अब आप समझ ही रहे होंगे, उसमें तो बहुत जरूरत पड़ गई होगी आपको पैसे की. तो आप अपने पेरेंट के पास गए और आप उनसे फिर से कुछ पैसे मांगे और कुछ बहाना बनाया आपने
क्योंकि आप सही तो बता नहीं सकते, तो आपने कुछ बहाना बना दिया कि मुझे नोटबुक चाहिए, तो उन्होंने आपको 200 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप क्या यहाँ ये और आप गए और वो आपने गिफ्ट खरीदा और जिसको देना था आपने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पापा क्या है, ये आपके पेरेंट्स का एक रिजर्वॉयर है, ओके। और आपका पैसा क्या है, करेंसी है, जो कब काम आया, आपको गिफ्ट्स लेने में काम आया आपको पेंसिल्स, आपको नोट्स, आपको बुक्स लेने में काम आया, ठीक है। सो whenever you need more money, you can get from your reservoir, okay. So similarly, amount of energy is stored as a form of ATP, and cells of our body will use it for performing various metabolic activities, ठीक है। जैसे कि आपने पैसा मांगा अपने पेरेंट से, उसी तरह सेल्स जो है वो क्या करता है, वो बॉडी से जो स्टोर फॉर्म में एटीपी है, वो एटीपी क्या करता है, विथड्रॉ करता है। एटीपी क्या करता है, विथड्रॉ करता है। क्यों? For various metabolic activities. So whenever cell need energy, ATP has been provided. And suppose if a cell needs more energy, okay, when you are running or doing workout, okay, then more number of ATP molecules are given. अब आप कभी डांस करते हैं, कभी आप डांस करते हैं, है ना, कभी आप वर्कआउट करते हैं, कभी आप भागते हैं, तो आपको इन सारे एक्टिविटीज के लिए यू नीड एनर्जी, ओके। सो एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. नाउ वी विल टॉक अबाउट our topic, respiration in human, okay, respiration in human. So here see, we have to discuss about two things. First of all, we have to discuss about the oxidation of food, that how the oxidation of food occurs, okay. In respiration, basically we have to cover two parts. First is we have to discuss about the oxidation of food and the way by which it's happened, and the way by which it's happened. So how do we obtain oxygen? Okay, see, first of all, we all know that oxygen is taken in. It is called taken in. Okay, that is called inhalation. And sorry about this arrow, and this is CO2, okay, this is CO2. CO2 is given out, given, okay, given out. O2 is taken in, that is called inhalation, and CO2 is given out, that is called exhalation. So this means the exchange of gases is taking place. Okay? When we breathe in, this is oxygen taken in. When we breathe out, this is carbon dioxide is given out. Okay. So we have to talk about this exchange of gases. And second, the oxidation of assimilated food. This oxidation of assimilated food. So we take oxygen from environment through nostril, and this O2 will enter our lungs. Finally, now from the lung, oxygen will reach to blood, and from blood will reach to where? It will reach to all those cells. Okay, this is how the exchange of gases is possible. Okay, ये देखिए यहाँ, yes, first point. The human respiratory system is more complex and involves breathing,
exchange of gases and cellular respiration. Okay, सो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, और वो क्या, ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन एंड exhalation and exchange of gases, and cellular respiration means only that oxidation of food, exchange of gases ये हम लोग देखेंगे, और breathing. Okay, so next point is a well-defined respiratory system helps breathing and exchange of gases. It helps in both. Okay, whereas breathing involves the inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. The gaseous exchange takes place in the lung, and the oxygen is supplied to all the cell of body. How this is supplied to all of cells of body? We take oxygen from environment through our nostril, and this oxygen will enter our lungs. Finally, now from lungs, oxygen will reach to the blood, and from blood then will reach to the all cells of the body. Okay. Now, अब आप लोगों में से बहुत कोई समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग चीज है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, रेस्पिरेशन means see, respiration has two part, like see, respiration, one is internal respiration, in which we'll talk about oxidation of food. Oxidation of food. Okay, this is oxidation of food. And second is external respiration. Okay, external respiration means this is exchange of gases. This is external respiration. When we breathe in oxygen, it's inhalation, and when we breathe out carbon dioxide, is exhalation. Okay, so basic concept is what? We take oxygen from environment. See what happened? We take oxygen from environment. This is clear. Now it reaches to our lungs. Okay, then what happened? It reaches to our blood. After that, it will go to cell, where internal respiration means cellular respiration means oxidation of food will take place. After that, this oxygen is transported to blood again. This blood will go to lungs, and CO2 is exhaled. Okay, what happens that here only, okay, oxidation of food take place, cellular respiration take place, so CO2 is the byproduct. Okay, CO2 is the byproduct after the oxidation of food. CO2 is the byproduct. Okay, देखिए हम लोग इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, वो कहाँ जाता है, लंग से. लंग से कहाँ जाता है, वो ब्लड में जाता है. ब्लड से वो कहाँ जाएगा, सेल में. वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, CO2 जो है वो गिवन आउट होगा. फिर CO2 कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा. फिर क्या होगा कि वो लंग्स में जाता है, और फिर एक्सहेलेशन होता है. ये क्लियर है आपका.
हमारे देखिए यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। ओके, अब देखिए हम लोग को डिफरेंस बताना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं नोट करना तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो डिफरेंस है जो हम लोग शुरू में बोल रहे थे कि आप लोग इग्नोर करते हैं और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को आप लोग एक ही समझते हैं, तो वो आज डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ये क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, so it involves chemical reaction, for example oxidation of food, but breathing is a physical process। वो क्या है, एक physical process है। ठीक है, it does not involve any chemical reaction, it's simply about the inhalation and exhalation that we are taking NO2 and giving out the CO2. It's simple process of inhalation and exhalation, here no chemical reaction is involved. The second point is, in respiration, both extracellular and intracellular respiration take place. Okay, what is meant by extracellular? Extracellular means that oxidation of that exchange of gases. Okay, and intracellular at the cellular level means that oxidation of food. So both extracellular and intracellular is happening, but here in breathing just only extracellular breathing take place. It is just exchange of gases. Now third is what? Enzyme actions involved, because chemical reaction is going on the cellular level and intracellular respiration. So enzyme will be involved. So enzyme action is involved, but in breathing no enzyme action is involved. Okay. In respiration, what happened that energy is released, but in breathing no energy is released. In respiration we see that energy is released in the form of ATP. Okay, we had seen here it is released. Yeah, we are seeing here that it is released in the form of ATP. Okay, but in breathing no energy is released. Okay, what happened in respiration, that all body cells are involved. Oxidation of food occur in each and every cells. But what happened in breathing, that only certain organ are involved. Respiration में सारा cells जो है वो involved होता है, क्योंकि जो सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन है वो सारे सेल्स में होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल अकर इन ऑल द सेल्स, बट व्हाट हैपन इन ब्रीथिंग, ओनली सर्टेन ऑर्गन। हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है। सो ओनली सर्टेन ऑर्गन आर इन्वॉल्व। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द होल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन वी विल नो। जब हम लोग पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एक देखिए अब एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि ब्रीदिंग में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ये कवर करेंगे कि कौन ब्रीदिंग का में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन ये सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन नाउ? Okay, it is a process in living organism. You can note it down that it is a process in living organism involving the production of energy. Okay, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance. Okay, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। इफ यू वांट टू know more about the respiratory system in human, about the respiratory organs, how breathing takes place, then you should subscribe this channel for get new update
ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, now in next class we will talk about the respiration in detail. This is the introduction, what is respiration and why we need to just get or release the energy and how it happens. Okay, now in further classes we will cover more topics related to respiration. Okay, and you can follow EseUp on Insta or Facebook. The link are provided below. If you want my note, if you want my note of life processes, okay, it is the easy explanation given in my notes. So if you want my notes, so it will be provided in the link. So just if you want the note, then कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होगा, जो ये सिंपल लैंग्वेज में मेरा जो ये नोट बना हुआ है, अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, जस्ट फॉर टुडे इट्स ऑल अबाउट रिस्पायरेशन। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए EseUp का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। EseUp के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।